योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पदं व्यालिं प्राञ्जलिनाथोऽस्मि अबहो पुरुषाकारं शङ्खचक्रस्यधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। ओ जय शिव शंकर नमामि शंकर जय शिव शंकर नमामि शंकर जय शिव शंकर नमामि शंकर जय शंकर नमामि शंकर हे गिरिजापति नमामि शंकर हे गिरिजापति नमामि शंकर हे गिरिजापति नमामि शंकर गिरिजापति नमामि शंकर जय शिव शंकर 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 नमामि शंकर हे गिरिजापति नमामि शंकर हे गिरिजापति नमामि शंकर हे गिरिजापति नमामि शंकर हे गिरि नमामि शंकर जय शिव शंकर 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 नमामि शंकर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय शिवाय नमः 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 ओम नमः शिवाय शिव 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 शिवाय नमः ओम 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 हर 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 नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय हर 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 नमः शिवाय हर नमः शिवाय जय शिव शंकर नमामि शंकर 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 जय शिव शंकर हर शिव 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 हर हर
Hara Shiva, Hara Shiva, Shiva Shiva, Hara Hara Hara. Hara Shankara, Hara Shankara, Shankar Shankara, Hara Hara Hara. Hara Shankara, Hara Shankara, Shankar Shankara, Hara Hara Hara. Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namah Shivaya, Om 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 Namah Shivaya. Shivaya, Om Namah 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 Shivaya, Om. हरिओम। आप उपस्थित यहाँ पर हमारे बीच में हिज हॉलीनेस परम पूज्य स्वामी शंकर तिलक जी महाराज को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ कि आज विश्व योग दिवस पर पूज्य महाराज श्री का हम सभी को आशीर्वाद ब्लेसिंग्स मिल रहा है। हम लोग बहुत बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आज इस योगालय परिवार के बीच में हम सभी उपस्थित हैं। हमारे दाईं ओर उदासीन अखाड़े के कारोबारी महंत कोठारी परम पूज्य स्वामी गोविंद दास जी महाराज योग के परमाचार्य हैं, उपस्थित हैं। मैं आपको भी इस स्थान पर स्वागत करता हूं स्वामी जी। संस्कार योगशाला के संस्थापक हमारे अनुज छोटे भाई हैं योगी नवीन जोशी जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं। योग के आचार्य राजेश नंदा जी उपस्थित हैं। आप सभी का इस स्थान पर स्वागत है, योगालय परिवार की ओर से स्वागत है। और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी देश विदेश से पधारे हुए योग के आचार्य, योग के टीचर और योगालय परिवार के सभी आचार्यों को, ब्रह्मचारी एवं ब्रह्मचारिणियों को मेरा प्रणाम। गिरीश जी उपस्थित हैं। गिरीश जी, आपका भी स्वागत है इस स्थान पर। यह योगालय परिवार पूरी दुनिया के लोगों को एक साथ जोड़ने का कार्य कर रहा है। हमारी जो वैदिक सनातन धर्म है, इसका प्रचार प्रसार कैसे हो, इसके लिए आज 9वां विश्व योग दिवस है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं विश्व योग दिवस की। आज इस शुभ अवसर पर यहाँ पर ट्रांसलेशन के लिए
स्वतंत्रता जी हैं, क्योंकि यह फेसबुक के माध्यम से, जूम के माध्यम से लगभग 70 देशों में यह प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और काफी लोग जुड़े हुए हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं के माध्यम से ट्रांसलेटर है यहाँ पर उपस्थित, उसका लिंक भी हमने फेसबुक पर डाला है। जो लोग उसके माध्यम से जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। आज की अध्यक्षता परम पूज्य स्वामी जी की अध्यक्षता में हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। स्वामी जी, this is the blessings for us. Now he will translate. So Hindi to English. Yes. अभी तक जो हमने बोला है आप 1 मिनट में इसको कंपाइल कर दीजिए। Because that translator now is coming. So he will तब तक यहाँ के कर दीजिए। So we first introduced all the acharyas here. So you need mic. For us. A big welcome to everybody, and an introduction of this joyous day that we're all here for, to celebrate the yoga and to celebrate the spreading of yoga throughout the world, and people to properly understand what it's about and the avenue to which we express it. So after a warm welcome to everybody, it's a very important understanding of what we're here for. And it means which we can spread yoga and Sanatana Dharma throughout the world and create a union and an alliance between everybody. So we can join together and then we can all understand the common goal and the common mission we have and to spread the word of yoga throughout the world. आज का जो मुख्य विषय है विश्व योग दिवस। आज Today is the day of yoga and the celebration of yoga. हम लोग योग को सिर्फ शारीरिक मानसिक अभ्यास के रूप में समझते हैं, लेकिन परम पूज्य स्वामी शंकर तिलक जी महाराज की दृष्टि में योग क्या है, यह अद्भुत ज्ञान आज हम लोगों को सुनने को मिलेगा। So people consider yoga to be some form of physical exercise, some form of abhyasa, towards the physical activity. But through Swami Shankara Tilaka, we learned today exactly what it is and what it is in its form of knowledge, not just exercise. योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके बारे में हमने बहुत सारे लेक्चर साहित्य शास्त्र में पढ़ा, लेकिन इसके लिए बहुत कुछ जो स्वामी जी से अभी हमारी जो 3 दिन पहले जो वार्ता हुई उसके बारे में जो इन्होंने कहा है वह वाकई में अद्भुत है। The origins of yoga we learned in various lectures and various classes, but today we'll learn in first person and in a very unique way. हम लोग योग को लेकर के पूरी दुनिया के लोग योग को शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक उत्थान के हेतु योग करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ योग है, यह आज हम सबों को जानने को, देखने को और सुनने को मिलेगा। Aside from our current understanding of what yoga is in comparison to the mind, in comparison to the body, today we will learn something different and something we did not know about it. आज का यह कॉन्सेप्ट स्वामी जी के द्वारा आपके गार्जियनशिप में, लीडरशिप में जो आज यह प्रोग्राम, जो यह इवेंट आज हो रहा है, इसमें योग के आचार्य हैं यहाँ पर स्वामी गोविंद दास जी महाराज और योगी नवीन जोशी जी महाराज। आप सबों का जो अनुभव है योग का, जो अष्टांग योग, क्रिया योग, भक्ति योग, हठ योग, लय योग का, यह सब लोग भिन्न भिन्न माध्यम से आज आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज योगा, योग क्या है। Under the guidance and leadership of Swami Shankara Tilaka, we also have Govind Das ji
योगी नवीन जोशी जी। Yogi Naveen Joshi, who together will explain you different perspectives and different ideas of what yoga actually is. Now have to heard about the what is yoga. योग क्या है? योग के विषय में जो मेरा मत है, जो मैं यह मानता हूं कि योग तन और मन के लिए तो है ही, आत्मा के लिए तो है ही, इसके साथ साथ यह चतुर्मुखी विकास, डायमेंशनल बेनिफिट्स देता है। So yoga is definitely for the body and the mind, and we all understand this. But what are the dimensional benefits of yoga? It's time for us to understand this also. Yeah, this is the four pillars. Four pillars. These are the four pillars. Yes. अब हम रिक्वेस्ट करेंगे परम पूज्य स्वामी गोविंद दास जी महाराज से कि आप अपने विचार योग के बारे में और अपने अनुभव को साझा करें, चूंकि आप उदासीन अखाड़े के संत हैं और आपने योग को जो साधा है, जो आत्मसात किया है, ब्रह्मचारी के बाद सन्यासी, तो सन्यास दीक्षा होने के उपरांत ऐसे बहुत कम योगी मिलेंगे जैसे स्वामी जी हैं। तो स्वामी जी का हमेशा से यह एक इनके ऊपर इनके गुरु की कृपा रही है, और गुरु शिष्य परंपरा में जो यह योग आया है कि किस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा में योग आया, उसके बारे में परम पूज्य स्वामी जी अपना विचार रखें। स्वामी जी will talk to us about how he came to this meaning and how who were his gurus and the lineage of gurus we'll talk about. actually translate कर दीजिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंच पर उपस्थित आदरणीय परम पूज्यपाद स्वामी शंकर तिलक जी महाराज और हमारे परम प्रिय पूज्य योगी आशुतोष जी महाराज, योगी नवीन जोशी जी, योगी नवीन जोशी जी, राजेश नंदा जी, योगी जी, आप सभी को मेरा वंदन नमन। आदरणीय योग के सभी छात्र और टीचर सबको नमन। संस्कार योग फाउंडर। बहुत ही हर्ष का विषय है आज कि इंटरनेशनल योगा डे में आज हम लोग पतित पावनी माँ गंगा के तट पर विराजित होकर के योग के माध्यम से पूज्य शंकर तिलक जी की सानिध्यता में योग के बारे में कुछ जानेंगे। It's a matter of so happiness that today on the event of Yoga Divas and in the presence of Ma Ganga, we will listen to Guruji about yoga and this day especially. Yeah. महर्षि पतंजलि का जन्म आज से 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। The birth of Maharishi Patanjali was 5,000 years back इन बनारस बनारस में। एक कुएं के पास एक वृक्ष है, वहां पे वो रहा करता। There was a tree near a tree. There was a near a tree, and he was living under a tree. शेषनाग का जिन्हें अवतार माना जाता था। He is called incarnation of Sheshnag. ऐसा माना जाता है कि महर्षि पतंजलि के बाद ही योग लिपिबद्ध किया गया। It is believed that after Maharishi Patanjali, this yoga lipi
was translated and it was put down on paper. वह जहाँ रहा करते थे वह कुआं आज भी स्थित है। That well is still there where he used to live. भारत में बहुत से योगी हुए और हठ योग के माध्यम से महर्षि स्वात्माराम जी जो गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे, There were many yogis in India, and one of the disciple of Maharishi Yogi was स्वात्माराम Swatmara. जी। He was one of the disciples. हठ योगा का जो मुख्य केंद्र है वह गुरु गोरखनाथ जी को माना जाता है, The center of Hatha Yoga is called Guru Gorakhnath Ji. क्योंकि उन्होंने हठ पूर्वक अपनी इंद्रियों को साधा था। Because with great force he had contemplated and he took care of his senses. यस, हठ योग भारत में बहुत से ऋषियों ने किया। मैं जिस संप्रदाय से आता हूँ उदासीन संप्रदाय है, उसका तात्पर्य भी यही है। I come from that Udasin Sampradaya, and the meaning of that is same, Hatha Yoga. उदासीन मीन्स उत धन आसीन, उत माने उठा हुआ, ब्रह्म में, आसीन मीन्स समाधिस्थ। Udasin means the one who is established in truth, established in Brahma, established in himself, गॉड, God, या Brahma. और पूर्व काल से आज तक जो हठ योग की भारत में पद्धति रही है, वह आज भी हिमालय में बैठे हुए ऋषि लोग उसका पालन कर रहे हैं। From past time, whatever was given to us, some yogis in Himalayas are still sitting and doing that sadhana. हठ पूर्वक अपनी इंद्रियों को रोकना, हठ पूर्वक अर्थात जो इंद्रिय हमारी विषय वस्तु के लिए भाग रही हैं, वहां से हटा करके ब्रह्म की ओर जोड़ना ही हठ योग है। Hatha Yoga is just retrieving your senses from outside world, all your senses, and moving them inwards towards God, towards Brahma. Forcibly you do that. That is called Hatha Yoga. योग के माध्यम से हम लोग तो बाहर की सुंदरता पा लेते हैं, बॉडी को, शरीर को अच्छा कर लेते हैं, लेकिन अंदर की सुंदरता, अंदर की शुद्धता जो आती है वो आती है प्राणायाम से, ध्यान से, समाधि से और गुरु सेवा से। We can conquer the outside world with our senses, but what comes from inside, that is through sadhana, that is through contemplation of God. Inside journey begins and it happens. भगवत में एक उदाहरण आता है कि जड़ भरत जी जो थे, उन्होंने गुरु जी से कहा कि आपके प्रवचन तो मैं बहुत सुनता हूं, परंतु जो आप कहते हैं वो मेरे अंदर उतरता नहीं। There is a saying that Jada Bharatji says, ki whatever you say, I understand everything, but it doesn't go deep inside. I'm not able to contemplate deep inside. That's what Jada Bharatji said in one of the verses. तो उन्होंने कहा कि प्रवचन तो आप बहुत सुनते हैं, आपको ज्ञान है, वाणी का ज्ञान है, ग्रंथों का ज्ञान है, परंतु आपने अभी तक बैठ करके गुरु की सेवा नहीं की है, इसलिए आपके अंदर हृदय में वो नहीं उतर सकता। He said ki you have done a lot of jnana, you have a lot of knowledge, you have, but you have not done any seva, any service to Guru. That's why it's not possible for you. Yeah. Seva is अपने अंदर इंटू करना है, अंदर करना है गुरु के ज्ञान को, तो आपको उसमें उतरना पड़ेगा। You need to go deep into it if you really want that knowledge to become your true self. यही बात भागवत में दूसरी जगह आती है। महर्षि वेद व्यास कहते हैं मैंने अनेक पुराणों की रचना कर दी है, परंतु भागवत जो सुनाने का अधिकारी है वो केवल सुखदेव स्वामी को दिया, क्योंकि सुखदेव स्वामी ने भागवत लिखी तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने अंदर उतारा था। Swami Sukadev had contemplated, and he only had that Bhagavad was inside that Sukadev. He had not written it, but he understood it, and that's why he could write it. And he only had this privilege of writing it down. आज योग दिवस है, आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि जो भी गुरु कहें उनके वचनों पर विश्वास होगा तो निश्चित रूप से आपके अंदर योग उतरेगा
और परमात्मा की ओर आप आकर्षित होंगे। Today is yoga day, and the yoga will really get into you if you listen to the words of Guru and you contemplate on it and you apply it in your life. क्योंकि विश्वासे गुरु वाक्येषु शब्द आता है कि जब तक आपको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं होगा तब तक आप उस मार्ग पर अग्रसर हो ही नहीं सकते। Unless and until you trust Guru's words, it's not possible to move on that path. You need to trust Guru's words. तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग गुरु के शब्दों को अमल करें, वाणी को अमल करें, क्योंकि बाहर की सुंदरता शुद्धता तो आ सकती है, योग करने से हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो सकती है, लेकिन अंदर की शुद्धता तब आएगी जब आप अपने अंदर गुरु के ज्ञान को उतारेंगे, जो ग्रंथों में लिखा है उसको उतारें। Yeah, if you only trust Guru's words, then only this will come to you. And if you really think that Guru can help you, then you need to have a lot of trust on that. योग का अर्थ ही यही है Meaning of yoga is that कि जोड़ना शब्द आता है कि योग जोड़ता है, किससे जोड़ता है? उस परमात्मा से जोड़ता है, उस ब्रह्म से जोड़ता है। yoga binds us to that, like it's a union of ourselves with the higher self, with God. This is the meaning, true meaning of yoga. It's a plus, you can say 1 + 1. और ब्रह्म से जुड़ना क्या है? ब्रह्म ही हो जाना। What is union with the God? You be that. अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, I am ब्रह्मास्मि, मैं ही God हूँ। योग में जब बहुत अंदर उतर जाते हैं, आप जब समाधिस्थ होते हैं, जब ध्यान में बैठते हैं, तब आपको अपने शरीर का कुछ भी भान नहीं रहता। You are not even aware of your body when you sit in yoga, because your body gets united with the divine, and you yourself become divine. क्योंकि शरीर तो आप बहुत सारे धारण करते रहते हैं। आज आपके पास मनुष्य का शरीर है, हो सकता है कल किसी दूसरे का शरीर हो। Because we get many bodies in our lifetime. Today we have this human body. It may be possible that next janma we will not get this body. We may have some other body. गीता जी में लिखा है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न च नीलम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात जो आत्मा है उसको ना ही जल गीला कर सकता है, अग्नि उसे जला नहीं सकती है, वायु उसे सुखा नहीं सकती है। वो कैसा है? बोले अजन्मा है, कभी जिसका जन्म ही नहीं होता है। Soul is ever eternal present. Nobody can destroy it. No water cannot wet it. Fire cannot burn it. The air cannot dry it. It is always there. It will always be there, just like the same. तो शरीर तो आते जाते रहते हैं, आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। You are not the body. This body will come and go, but soul will be ever present. तो आज के दिन मेरा यही कहना है, और इसी के साथ और एक बात, छोटी सी बात करता हूं मैं। संन्यास कब लिया जाता है? जब उसकी स्मृति रहती है, लेकिन मेरे संन्यास में स्मृति थी ही नहीं, अर्थात मुझे पता ही नहीं था कि संन्यास होता क्या है और गृहस्थ क्या होता है, तब मैंने संन्यास लिया था। He's saying he didn't know what is sannyasa. When he took sannyasa, he didn't even know the meaning of what is sannyasa, grasta, and all these ashramas. But still he took over it. Yeah. मैं उस समय बहुत छोटा, 4 से 5 वर्ष का था, तब मेरे गुरुजी ने मुझे गोद ले लिया था। He was only 4 to 5 years old when Guruji just adopted him. इसके बाद मैंने 2010 तक केवल लंगोटी लगा करके तपस्या किया। Then up to 2010, he was wearing only a small piece of cloth, and he did a lot of tapasya. Kopin, only kopin. Only Kopin. Coping. kopin is that small. इसके बाद Kopin is 2010 के बाद फिर मैंने स्वाध्याय किया, इसके बाद योग का आचरण किया, आज आपके पास बैठा हूँ। After that, he studied shastras, and then he found knowledge. And today he is sitting here advising us all. बहुत धन्यवाद आप सभी का। Thank you so much. हरि ओम। I have स्वामी जी, मुझसे आप एक सवाल है, शायद यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे लोगों का होगा।
कि कहीं अब आप पछता तो नहीं रहे हैं संन्यास लेकर के? And then he's saying, I want to ask whether you are repenting after taking sannyasa or it's okay with you. स्वामी जी ऐसा है कि मनुष्य शरीर धारण करके कोई सुखी हो ही नहीं सकता है। सन्यासी भी कहीं ना कहीं दुखी तो रहता है। He's saying it is not possible to be without suffering in this life, and even sannyasi is in that human form, so he also gets it sometimes. क्योंकि कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है गृहस्थ में कि हम रह करके साधु होते हैं और सन्यास में रह करके भी हम कभी कभी साधु नहीं बन पाते। Sometimes it's like that, like those people who are living in grihastha, sometimes they are inside like sannyasis, and sometimes the sannyasis even don't lead a sannyasi life. It happens sometimes. क्योंकि जो It's an inside story. क्योंकि जो विषय है वो तो चाहे आप कहते हैं रोग और भोग, ये दो ऐसे हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे सन्यास, यदि आपके भाग्य में है तो वो तो मिलेगी। Yeah, these two things, whether you are getting illness or whatever bhoga, all that you will get, whether you are a sannyasi or a grihastha or whoever. If you are in human body, you are bound to get that. लेकिन जो लक्ष्य लेके चले हैं, मेरा कहने का तात्पर्य है जो भी लक्ष्य लेके जो चले हैं उनको अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए, क्योंकि हम लक्ष्य से भटक जाते हैं तभी हमको कुछ प्राप्त नहीं होता है। कहते हैं माया मिली ना राम। But if you have the destination, if your destination is clear, you are bound to get it. But destination clear नहीं है तो कुछ नहीं मिलने वाला है. But not this world, not the God. Nothing you will get. You get confused in it. बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी का, एक बार जोरदार तालियों से क्लैपिंग। और स्वामी जी ने बहुत इतना अच्छा नॉलेज दिया है कि वाकई में इस स्थान पर बैठ करके परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में हम सभी बैठे हैं, गंगा मैया की गोद में बैठे हैं, और अखाड़े का एक साधु एक सन्यासी आकर के आपको यह ज्ञान दे रहा है अपने लाइव अनुभव को, जो आपने देखा है अभी। और जूम मीटिंग के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लाखों लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। हम सब लोगों के लिए मंगल कामना करते हैं। Many people all over the world are watching it, and we are so fortunate that we are sitting in his company, and we pray for everybody's well-being and happiness. अब हम अगली कड़ी में रिक्वेस्ट करते हैं योग के आचार्य, संस्कार योगशाला तपोवन ऋषिकेश के संस्थापक योगी नवीन जोशी जी महाराज से कि आप अपने अनुभव को, चूंकि आपके पास में इतने सारे शिष्य शिष्याएं सब हर महीने योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स के लिए आते हैं, आप सबको वैदिक सनातन परंपरा से, वैदिक सनातन धर्म के अनुकूलता के साथ आप सबको योग के आचार्य बनाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर बहुत सारा उत्तरदायित्व है। और यह आगे कैसा हो और कैसे करें वो हम आगे भी प्रयास मेरा रहेगा कि स्वामी जी, स्वामी शंकर तिलक जी के नेतृत्व में इस पर और आगे कार्य करना है। So in the leadership of Swami Shankar Tilak ji, we have to work a lot on yoga and other things, and we welcome one of the yogis from Tapovan, and he is going to योगी नवीन जोशी जी, Yogi Naveen Joshi ji from Tapovan, and he is a yogacharya. He teaches many teachers training, and many teachers he is preparing for yoga. So we are fortunate to be in his company. He'll give his. he is the founder of Sanskar Yogashala. He's the founder of Sanskar Yogashala. This is the name of his foundation, Sanskar Yogashala. सब उधर की ओर बढ़ा दीजिए। अखंड मंडलाकार व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
जय गुरुदेव। Jai Guru. मंचासीन इसमें चले आप अंग्रेजी में आप बोलते थे आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी आप इसमें समय की बचत और अच्छा लगे There is no need to translate it in Hindi. Hindi में करने का जरूरत नहीं है. That he is speaking in English. That's fine. No, because I have people online. मंचासीन परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य शंकर तिलक जी महाराज के सानिध्य में जो यहाँ आज योग दिवस का हम प्रोग्राम मनाने जा रहे हैं, We are in the company of Swami Shankar Tilak ji. We are going to celebrate Yoga Day today here. शंकर तिलक जी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। I salute and bow down to his feet, lotus feet. परम आदरणीय योगी आशुतोष जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। उनका भी हमें सौभाग्य और उनका समय अमूल्य समय हमें प्राप्त हो रहा है। We are getting the company of many eminent masters along with us. We salute them. महंत गोविंद दास जी महाराज, राजेश नंदा जी महाराज, Mahant Govindan Ji Maharaj और सभी योग साधक और योगालय परिवार को भी साधुवाद और उनका आभार। and I salute all the Yogalaya family and all the sadhaks who are gathered here to listen to and celebrate this day. तो सर्वप्रथम आज का जो दिवस है जो हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो वैसे तो एक साधक के जीवन में हर दिन ही योग दिवस है। Today we are celebrating International Yoga Day, but for in the life of a sadhak, every day is Yoga Day only. It's not one day, every day. वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो साधक को अपने जीवन में करते हैं योग के रूप में। तो जो योग का जो ज्ञान है वो बहुत ही सरल विधा से, जो महर्षि पातंजलि जो परंपराएं थी, दो ऐसी मुख्य परंपराएं थी, एक नाथ परंपरा और एक ऋषि परंपरा। There was one Nath Parampara and one Rishi Parampara, and many yoga things was done by Rishi Patanjali, and he has given us path and light on that. जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, आज से 5 से 6,000 वर्ष पूर्व योग सिर्फ पुरुषों के लिए था, स्त्रियों के लिए निषेध था, और नाथ परंपरा से हर किसी के लिए नहीं था, सिर्फ सन्यासी के लिए योग था। As we all know that this yoga was not for everybody, especially it was not for women, but men were only into that. But due to that Nath Parampara, it was only for sannyasis. It was not available to everybody. वहां पर ऐसा नहीं था कि स्त्रियों के लिए योग नहीं देना था, लेकिन उसके पीछे कारण था। स्त्री जो है वो जगत जननी है, माँ है, वो अनेकों विभिन्न रूपों में अपने दायित्वों का निर्वहन करती है, और जगत कल्याण के लिए जो जन्म और मृत्यु का चक्र था उसको व्यवस्थित बनाए रखने के लिए नाथ परंपरा का नियम था। This was the rule. It was not that they were against women and they didn't want to give it to the women, but because she was considered mom and she had many other responsibilities, coming and going, birth and death continues. So that's why this rule was made. Otherwise, they were not against women. तो हमें महर्षि पातंजलि जो भगवान विष्णु के अवतार में जिनको माना जाता है, तो उन्होंने इस धरा पर अवतरित हुए आज से 5 से 6,000 वर्ष पूर्व महर्षि पातंजलि के रूप में। और सबसे जो आश्चर्यजनक बात है, माँ के गर्भ से उनका जन्म नहीं हुआ, जो माना जाता है वो अंजलि पातंजलि जैसे उनकी जो माता जी जो माना जाता है योगिनी गेनुका जी, तो योगिनी गेनुका जी जैसे ही जल संकल्प ले रहे थे समाधि के लिए, तो वैसे ही सर्प जब हाथ पर आया तो वो मनुष्य रूप में परिवर्तित हो गए, तो जिनको शेष नाग का अवतार भी माना जाता है। Maharishi Patanjali was not born in the usual way as everybody is born. Her mother gave birth, she was taking sankalpa, and a snake, a nag snake came to her hands, and it was converted into Sheshanag. So Vishnu, incarnation of Vishnu is also considered. Patanjali is considered incarnation of Sheshanag because he came in the hands of her mother. Patanjali. It's Anjali is this hands.
arms. हम सभी को परम सौभाग्य है महर्षि पतंजलि जिनको आधुनिक योग के पिता भी कहा जाता है. We are so fortunate. He is also called the father of Indian yoga. महर्षि पतंजलि ने हमें एक सरल भाषा में, सरल रूप में, जो उन्होंने अनेकों ग्रंथ लिखे, उनमें से एक प्रसिद्ध ग्रंथ है योग दर्शन. In a very simple way, he has written a grantha of a sacred book. It's called योग दर्शन. Yoga Darshan, और बहुत सारे लोग उनको योग सूत्र भी कहते हैं. and it's also called Yoga Sutras. वहां पर उन्होंने 196 फॉर्मूला के प्रोवाइड दिए हैं, जहां पर 4 भागों में. In 196 verses, it is divided into 4 parts. लेकिन जो उनका 196 फॉर्मूला का जो पूरा कंक्लूजन है, वो एक अष्टांग योग के रूप में हमें प्राप्त हुआ. And all these 196 verses, they were in the form of Ashtanga Yoga, what we popularly known as. जो हम सभी लोग जानते हैं, जिनमें अष्टांग योग 8 नियम, जिन पर चलकर हम अपनी योग साधना को सफल कर सकते हैं और अपने जीवन को फलीभूत कर सकते हैं. We all know that walking on this Ashtanga Yoga, we can fulfill our life and we can move ahead in our life towards yoga. So, जो ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं. हम प्रयास करते हैं कि जो हर एक योग का साधक है, इन यम और नियम, जो आज का आधुनिक साधक इनको भूलता जा रहा है. We are forgetting the 8 parts of this Ashtanga Yoga, that yam, niyam, asan, pranayam, pratyahar, dharana, dhyan, samadhi. We are forgetting all this. So especially the yam, niyam. तो यहाँ पर जो मैं ज्यादा ना समय लेकर योगी आशुतोष महाराज जी का जो सानिध्य, जो आदेश प्राप्त हुआ है, तो मैं इसको सरल भाषा में, जैसे आज के योग के आचार्य तैयार हो रहे हैं, तो उनको सर्वप्रथम हमें 4 ऐसे नियम हैं जिन पर अमल करना है, जिनको अपने जीवन में उतारना, फिर हमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इन पर चलना है. First of all, we need to follow the 4 rules which the modern acharyas they give us, and then only we can move ahead. So we need to follow 4 rules. तो पहला है अनुशासन. First is discipline. दूसरा है सेवा. Second is service. फिर है श्रद्धा. Third is trust. और फिर है समर्पण. Then comes surrender. तो सर्वप्रथम अनुशासन, जो डिसिप्लिन है, तो महर्षि पतंजलि ने भी उसको बार बार वही समझा है. पहला सूत्र है अथ योग अनुशासन. The first is Atha Yoga Anushasanam, discipline. तो जब तक हम अनुशासित नहीं होंगे, तब तक हम योग सीख ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते. Till we are disciplined, we cannot learn yoga. We need to have discipline. तो हम सभी को प्रयास करना है कि अपने जीवन में अनुशासन का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें. So we need to follow this discipline and we need to encourage others also to follow that. तो जो योग के महर्षि पतंजलि ने जो सरल भाषा में जो समाज, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, स्त्रियों के लिए, सबके लिए स्वतंत्र कर दिया कि सब उसको कर सकते हैं. गृहस्थी, जो गृहस्थ में रहता है, वो भी योग कर सकता है. जरूरी नहीं है कि संन्यास लेकर हिमालय में, मठों में, मंदिरों में जाए. गृहस्थ जीवन में भी रहकर साधक एक योगी हो सकता है, लेकिन आवश्यक है उनको 8 जो नियम है उनका पालन करना. You need to follow all the 8 rules, even if you are a grahastha or you are a woman or a child, whoever you are. This becomes so simple for everybody. It's not only for sannyasis, and in Himalayas, yogis, it is available to everybody. तो हमें इसका रोज, हर जो हमारी दिनचर्या होती है, उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, योग की विद्या को यम नियम के माध्यम से. So we should follow it in our daily routine in the form of yama, niyama, asana. All these rules we need to follow. तो मैं अधिक समय न लेकर आप सभी को पुनः एक बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और परम पूज्य संत तिलक महाराज, योगी आशुतोष जी महाराज, गोविंदास जी महाराज जी के चरणों में एक बार पुनः दंडवत प्रणाम. आप सभी को Without taking much time, again I give congratulate you on this yoga day, and I salute Swami Shankar Tilak ji and everybody present here. बहुत बहुत
आभार योगी नवीन जोशी जी महाराज का, जिन्होंने बहुत ही कम शब्दों में आप लोगों को जानकारी दिया कि अष्टांग योग क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और किस प्रकार से योग के आचार्य को तैयार करना है। इस पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला। Once again, I feel gratitude and I give my gratitude to Swamiji, who has in very simple words explained the Ashtanga Yoga to all of us and how to follow it. आज विश्व योग दिवस के शुभ अवसर पर, Today on the auspicious occasion of Yoga Divas, जो अभी आपने बतलाया, क्योंकि मेरी शिक्षा दीक्षा बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर से हुई है, all my learnings and teachings are from Bihar School of Yoga. जो 4 सूत्र हैं वह सिमिलर ही हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। 4 पिलर्स, 4 स्टेप्स, जो 4 सूत्र हैं, जैसा अभी योगी नवीन जोशी जी ने बतलाया, तो हमारे गुरु ने दिया प्रेम, सेवा, भक्ति और दान। Prem, Shakti, love, service, and giving donations. Its 4 rules are just the same as प्रेम, सेवा, भक्ति और दान। इन चारों सूत्रों के समाहित होने के बाद ही व्यक्ति योग का आचार्य, धर्म का आचार्य की ओर उस दिशा में बढ़ सकता है। Only after the assimilation of all these 4, we can move towards this path and become a yogi and in yoga. जैसा अभी हमारे परम पूज्य योगाचार्य महंत गोविंद दास जी महाराज ने बतलाया कि गुरु का कंट्रीब्यूशन कितना होता है जीवन में। What is the contribution of Guru? He has just explained. गुरु कृपा से कुछ भी संभव हो सकता है। Anything is possible with Guru grace. गुरु चाहे तो एक हम लोग कहानी सुनते आए हैं कि किस प्रकार से नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बने। We have all listened to the story how Vivekanand, नरेंद्र how Narendra became Vivekanand with the grace of Guru. That's true. यह एक सत्य है, गुरु कृपा से सब कुछ संभव है। It is possible that with Guru's grace, everything is possible. आज हमारे बीच महंत रवि शास्त्री जी महाराज, प्रपन्नाचार्य जी महाराज उपस्थित हुए हैं। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत। योग जीवन जीने की कला है। Yoga is a way to live life. योग अनुशासन है। Yoga is discipline. योग कर्म योग है। Yoga is karma yoga also. योग भक्ति योग है। It's bhakti yoga also. It's devotion also. योग राज योग है। It is also Raj yoga. किस प्रकार से राज योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, हठ योग, लय योग, क्रिया योग जब अवतरित होता है तो व्यक्ति स्वामी शंकर तिलक बन जाता है। Many. All these yogas, whether it is bhakti yoga, jnana yoga, prema yoga, karma yoga, all these yogas, when they assimilate together, then we get one Swami Shankar Tilak Ji Maharaj. So you have to learn. We have to learn. हम सब लोगों को इनसे बहुत कुछ सीखना है। So we need to learn a lot from him. हम लोग यह समझते हैं कि योग हमारी भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है, हमारी विरासत है। So yoga is our culture and it is our tradition and it has been given to us by our yogis. We need to adopt it. यह हमारी विरासत तो है,
लेकिन जब हम इसे अपने जीवन में उतार लेंगे तो इसका वसीयतनामा हो जाएगा। So interest will only be taken when we live it in our life. It's not only the learning, only living that. Learning to living when we will come, then it will be full use of it. विश्व योग दिवस के अवसर पर हम आप सब लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। On this yoga day, we pray for your health, wealth, and we are saluting you. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे बीच में उपस्थित इस कार्यक्रम के सूत्रधार महंत रवि प्रपन्नाचार्य जी महाराज से कि वो अपने अनुभव, चूंकि आप भी ऐसे लोग कहते हैं कि जो योग अष्टांग योग, जो हठ योग का अभ्यास करे, हम लोग उसी को योगाचार्य मानते हैं या कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। जिस व्यक्ति के भीतर, जब मैंने कहा कि कोई भी राजयोग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, हठ योग हो, किसी भी प्रकार का मार्ग, यह तो रास्ता है, अलग अलग है। जो उतर गया वह योगी है। I don't understand that it is called that whoever is following Hatha Yoga is a real yogi, but I don't understand this. I understand that those who, and the one who has taken it inside and the one who has mastered it still, that only is the true yogi. अब हम अनुरोध करते हैं परम पूज्य महंत रवि प्रपन्नाचार्य जी महाराज से कि वो अपना आशीर्वचन हम सबों को दें। We request Swami Prapanacharya ji to give his blessings to all of us. Nidhanam Kalimalamatanam Pavanam Pavananam Partheyam Yanma Mukcho Sabadipadaha Prapteya Prastitasya Visram Astanamekam Kavivar Vachasam Jivanam Sajjananam Bijam Dharmadhyumasya Parvobhava Bhavatam Udaye Ramanama Guru Brahma Guru Vishnu Guru Dev बोलिए सतगुरुनाथ महाराज की जय, बाबा जी महाराज की, बोलिए स्वामी तिलक जी महाराज की जय, बोलिए स्वामी शंकर तिलक जी महाराज की, सभी संतों की गौ माता की माता की भारत माता की सभी संतों की आज के आनंद की और जो नहीं आए उनकी भी और जो आएंगे कल उनकी भी पवित्र पावनी माँ गंगा के तट पर आप और हम बड़ी प्रेम और श्रद्धा के साथ Yeah, we are those who have not come here, he is saluting them also, he is saluting everybody, and in the presence of Ma Ganga we have gathered here, so he is very happy and saluting everyone. जिनकी अध्यक्षता में आज हम विश्व योग दिवस बड़ी प्रेम और श्रद्धा के साथ मना रहे हैं। अनंत श्री विभू सिंह संत शिरोमणि अंतरराष्ट्रीय संत स्वामी शंकर तिलक जी महाराज, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। I salute International Guru Swami Shankar Tilak Ji Maharaj, in whose leadership we have organized today's event and this yoga. और वैदिक फाउंडेशन हिमालय की एक माला में सभी संतों को पिरोने वाले हम सभी संत समाज के प्रिय हमारे आचार्य आशुतोष जी महाराज,
The one who has assimilated all the knowledge, all the yogas in one, Swami Ashutosh Maharaj. आशुतोष जी के लिए मैं एक शब्द बोलूंगा, प्रेम डोर में बांधी बंधन टूटे ना, यह डोरी है गहरे रंग की, झाप लगी इस पर सत्संग की। He's telling that this door will never break because उनके ऊपर like it's a color of satsang has been on it and it is so strong it will never break. कभी हमने आशुतोष जी के चेहरे में गुस्सा नहीं देखा। We have never seen anger on his face. और ये योग का ही प्रभाव है, वसुधैव कुटुंबकम। हम बोलते तो हैं अपने भाषणों में, अपनी कथाओं में, लेकिन साक्षात प्रतिमूर्ति हमारे आशुतोष जी में दिखाई देती है। क्या तेज है! It is the effect of this, and it is the light on his face we can see, because he's the whole family is his world. Vasudhaiva Kutumbakam. That is why you can see that light and grace on his face. हमारे संतों के प्यारे सुदीक्षण मुनि जी महाराज, मैं उनको भी गोविंदास जी महाराज, मैं उनको भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और हम सबके प्यारे आचार्य नवीन जी, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। राजेश नंदा जी, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और समस्त जनमानस, हमारे वैदिक फाउंडेशन हिमालय के सभी साधक साधिकाएं एवं यहाँ पर जो भी उपस्थित आए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आपका सौभाग्य है कि इस गुरु परंपरा में आप स्वामी शंकर तिलक जी महाराज, जिनका आज देखिए एक तो योग दिवस है, आपको इतने संतों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। We are so fortunate that we have got the company of all these saints here and in the able leadership of Swami Shankar Tilak Ji Maharaj. We are so fortunate. आज योग दिवस है और मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। ये जो जगह है, Today is yoga day and I'm going to tell my experience of being on this place. क्योंकि 70 के दशक में जब महाराज जी, जब यहाँ तांगे हुआ करते थे, जंगल हुआ करता था और ना इतनी आबादी थी, संत महात्माओं का एक दूसरे आवागमन होता था, जैसे हमारे परिवार का होता है। In the 70s, he's telling this place was not like this as it is today. It was full of jungle, it was full of forest, concrete, and going and meeting each other. It was not very common and it was not so easily possible. और संतों को कहीं जाने के लिए हमें सोचना पड़ता था, क्योंकि जंगल होता था, समय पे नहीं जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा। और फिर जिस स्थान पे, गुरु के स्थान पे जाना है, तो उसकी व्यवस्था भी देखनी पड़ती थी, जंगल से लकड़ी लानी पड़ती। So it was not so easy like when we had to move to a guru's place, because it was full of jungle and we had to collect so many amenities to make it possible to reach somewhere. But today we are so fortunate. हम सब भाग्यशाली हैं कि ऐसे दिव्य संत के स्वामी शंकर तिलक जी महाराज, जिन्होंने कठोर तपस्या करी अपने स्वामी तिलक जी महाराज जी के सानिध्य में 70 के दशक में। In the 70s, he has done a lot of tapas, he has done a lot of extremities in the presence of his Guru Tilak, and today he is in front of us. How much he has done, we cannot imagine even. और आप सभी भी ऐसे दिव्य संत का आपको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, और ऐसे दिव्य संतों का आपको महाराज जी के सानिध्य में आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। We are getting the blessings of so many eminent and lighted persons, who those who are enlightened. We are really fortunate in our life. भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। God, my life should be for world. यह जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। Let this life be for serving others. मन में विवेक जागे, हम धर्म को ना भूलें। Let light enters my heart and let's not forget Dharma. चाहे हमारी गर्दन तलवार के लिए हो। Even if there is a sword on our neck. और आज इस योग दिवस के अवसर पर आप संकल्प लें। Let's pledge on this yoga day. क्योंकि
हम भाग्यशाली हैं कि गुरु की शरण में आकर अगर हमने उस परम पिता परमात्मा को याद नहीं किया, if we are not remembering that Lord in the presence of his Guru, then क्योंकि गुरु ही हमें योग के मार्ग में ले जाता है, गुरु ही हमें सद्मार्ग में ले जाता है, गुरु ही हमें अच्छा आचरण करने को सिखाता है, और कोई नहीं सिखाएगा। आप स्कूल में जाएंगे, आपको लेक्चर देंगे, टीचर लेक्चर देगा, पर लेकिन सद्मार्ग में आपको स्वर्ग का रास्ता भी गुरु दिखाएगा। और ये कहाँ मिलेगा? इसी माहौल में, सत्संग में ही आपको मिलेगा। ये स्कूल में नहीं मिलेगा, ये शिक्षा ये सत्संग में ही मिलेगी, इन संतों के द्वारा मिलेगी। Guru only will show you the path of light, the path of dharma, the path of discipline. He only will take you to the right path. You will not get it in a school. School you will get the knowledge, but the true jnana or the true knowledge you will get in the company of saints like this. मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। We get the true happiness in your feet. यह विनती है पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। We pray every moment that we have our attention on you. और मैं पुनः एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा, इस योग दिवस के अवसर पर हम संकल्प लें, गंगा को स्वच्छ रखें और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी गुरु के बताए हुए मार्ग, क्योंकि हम योग तो करते हैं उसके बाद इतनी गंदगी छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। गुरु के बताए हुए मार्ग में चलना है, गुरु जो बताए उसको सीखना है, अपनी बुद्धि नहीं लगानी, गुरु के बताए हुए मार्ग में चलना है। जो गुरु बताएगा वो हम करेंगे। Let's pledge once again that we will keep Ganga clean and we will not pollute the environment. We'll walk on the path of righteousness, what our Guru is teaching us, and let's once again pledge to these things. मैं पुनः एक बार अपने सदगुरु स्वामी शंकर तिलक जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके आज इस योग दिवस के पावन अवसर पर मैं सभी भक्तों का और यहाँ पे हमारे पूज्य संतों का वंदन करते हुए, चंदन वंदन अभिनंदन करते हुए मैं प्रणाम करता हूँ। आज ऐसा पुनीत अवसर, आप सब भाग्यशाली हैं। Today is such an auspicious day and we are so fortunate. So once again I salute and bow down to all the saints and everybody. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। एक बार मेरे प्रेम और श्रद्धा के साथ बोलेंगे, बोलिए स्वामी शंकर तिलक जी महाराज की, बोलिए स्वामी शंकर तिलक जी महाराज की, बोलिए स्वामी तिलक जी महाराज की, बोलिए स्वामी तिलक जी महाराज की, बोलिए बाबा बजरंगदास जी महाराज की। सभी संतों की जय, गंगे मैया की, गौ माता की और योग दिवस की जय, आज के आनंद की जय, आशुतोष जी महाराज की, सभी संतों की जय। महाराज की बहुत ही कम शब्दों में परम पूज्य रवि प्रपन्नाचार्य जी महाराज ने अपनी बात रखी। In very small words, in very few words, he has kept his words. बहुत सारे सूत्र फॉर्मूला आपने दिया है जिसको फॉलो करना है। He has given many rules and sutras and which we all need to follow. यहाँ पर जो लोग बैठे हैं और जो लाइव सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम लोग सभी यहाँ से उन सबों के जीवन के उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। We pray for everybody, those who are sitting here and those who are on international platform all over the world. जिसका हम सबों को काफी लंबे समय से इंतजार है, अब वो घड़ी आ गई। This moment has come which we were waiting for from so long. हम सभी लोग जिनको सुनने को आतुर हैं, We are all waiting. We are so eager to listen to home.
मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ परम पूज्य स्वामी शंकर तिलक जी महाराज से कि आप की अध्यक्षता, आपका उद्बोधन, आपका आशीर्वचन, आपका सूत्र आज ब्रह्म ज्ञान, दिव्य ज्ञान हम सबको मिले। I request Swami Shankar Tilakji Maharaj to give his guidance, his grace, his words, and bless us all. एक बार जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें परम पूज्य शंकर तिलक जी महाराज। Ajarangadakshaaya Gurave Kishya Sansara Harine Sadatmane. Self-love, give, purify, meditate, realize. 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 Be good, do good, be compassionate. Be good, do good, be compassionate. Self-love, give, purify, meditate, realize. 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 Be good, do good, be compassionate. 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 Adapt, adjust, to accommodate. Adapt, adjust, to accommodate, adapt, adjust, to accommodate. Self-love, give, verify, meditate, realize. Be good, do good, be compassionate, adapt, adjust, to accommodate. Support instant, support often is the essence of yoga. Support instant, support often is the essence of yoga. Support instant, support often is the essence of yoga. Support instant, support often is the essence of yoga. Self-love, give, purify, meditate, realize. Self-love, give, purify, meditate, realize. Be good, do good, be compassionate. Be good, do good, be compassionate. Adapt, adjust, to accommodate. Adapt, adjust, to accommodate. Support insult, support offense is the essence of yoga. Support insult, support offense is the essence of yoga. Shri Satgurunath Maharaj ki, Ishwara Dharma Bhagavan ji ki, Jai Jai Sitaram. Swaghatam to Yogalaya Ashram. We welcome you to Yogalaya Ashram. In the beginning, thank you for attending this call. Yesterday, we thinking in the presence of Yogi Asutoshi what we want to do the 21 of the great day of yoga. I'm thinking organize these things.
ये बहुत अच्छा दिन है योगा का और इनकी कंपनी में इन सबके स्वागत में और इन सबके सानिध्य में आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जैसे। And my pranam and respect first to Sri Yogi Ashutosh Ji. फर्स्ट मैं योगी जी आशुतोष जी को रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। He's Acharya Ji is a master of masters. ये मास्टर्स के भी मास्टर्स है, योगाचार्य जी हैं। And Sri Yogi Govinda Ji Das Ji, who is a Hatha Yoga Acharya, very famous Hatha Yoga Acharya Ji. विराट योगा आचार्य जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। स्वामी गोविंद दास Govinda Ji, and she's coming from Haridwar today. Is spend more time than go to Kailas. No? You're from Haridwar. और अभी थोड़ा टाइम यहाँ बिता के हमारे साथ कैलाश जाएंगे। And my respect and gratitude to my, I'm sorry, my son Prapanna Acharya Ravi Maharaj Ji. प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी का भी मैं बहुत इज्जत करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। I respect him in his spiritual authority, but I love him because for many years, I take care of him and he take care of me like a son to the father, no? उन्होंने मेरा पिता की तरह मेरा ध्यान किया, इसीलिए मैं उनका बहुत बहुत आदर करता हूँ और उनसे प्रेम करता हूँ। And my respect to Yogi Naveenji Joshi Ji, who is a great yoga acharya. नवीन जी का भी बहुत बहुत आदर करता हूँ। And the name of his institution say very good things. Is Samskara Yogashala is a place of we make a good impressions about yoga for all of life in our Sukshma Sharira, for never forget. संस्कार योगाशाला का जो योगदान है योग के क्षेत्र में वो कभी भी भूला जा नहीं सकता, एंड वो बहुत आगे बढ़ा चुके हैं। Remember in the chapter 6 of the Bhagavad Gita was one important dialogue between Arjuna and Sri Krishna. अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में एक बहुत ही सुंदर संवाद है जो हम अभी सुनेंगे। In this chapter, Sri Krishna tried to teach Arjuna the Atma Samyama, how to contemplate it, the divine consciousness. आत्म संयम कैसे रखना है, डिवाइन भगवान से कैसे मिलन करना है, वो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। But for contemplate the divine consciousness, first we need to have a very pure mind. भगवान से मिलने के लिए, उनसे यूनियन होने के लिए हमारा दिल का साफ होना बहुत बहुत जरूरी है। But like Patanjali teach us, mind is very unstable. जैसे पतंजलि हमें पढ़ाते हैं कि जो हमारा मन है वो बहुत ही घूमता रहता है, इधर उधर टिक के नहीं रहता है। There are many defects who attempted the equilibrium of the mind. बहुत सारे prophets हैं जो कहते हैं हम माइंड को पकड़ सकते हैं, माइंड को टेम कर सकते हैं। And for this reason we need yoga. And for this reason, इसी के लिए हमें योग की जरूरत पड़ती है। We need yoga for understand our real nature, meaning our relationship with Paramatma. हमें योगा क्यों चाहिए? हमें भगवान के साथ हमारा जो संपर्क है, सीधा संपर्क बनाने के लिए, भगवान से मिलने के लिए हमें योगा की जरूरत है। But this Paramatma not mean he is very far on the this Paramatma means very inside. परमात्मा का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बहुत दूर कहीं हमसे बैठे हैं और हमें उनसे मिलने जाना है, वो यही हमारे पास हमारे अंदर ही है। Yes, in this same chapter, Krishna advised to Arjuna, if your Atman is not imbalanced, your Atman is your enemy. इस सूत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अगर आपकी आत्मा आपके बस में नहीं है तो आपने नहीं सीखा है, आपको आत्मा को बस में करना। What is Atma? The consciousness you think you are. जो आत्मा क्या है? वो कॉन्शियस है, वही भगवान जो आप हैं, वही है। You thinking you are a body, you are a body. अगर आप बोधी समझे अपने आप को तो आप बोधी हो जाएंगे। If you thinking you are Indian, definitely you are Indian. अगर आप अपने आप को भारतीय समझेंगे तो आप भारतीय बन जाएंगे। If you thinking you are Napoleon Bonaparte, you are Napoleon Bonaparte. If you think you are Annapurna Bonaparte, आप जो अपने आप को समझेंगे वही बन जाएंगे। The avidya, the ignorance is dependent of the consciousness you have.
ये हमारा जो इग्नोरेंस है, हमारी जो हम समझ नहीं पाते हैं, यही योगा से दूर ले जाता है। This is the reason the scriptures say, no, you are Tattvam, you are this, you are God, you are Ishvara. इसी से पता चलता है, और इसी तत्व में तत्वमसि, तुम वही हो, तुम वही भगवान हो, उसी का पाठ हो, वही हो, वही समझना। But we don't trust in this. We don't trust. But we don't, पर हमें उस पे विश्वास नहीं होता है। We prefer to thinking, I'm the body, I'm Mr. So, I have this problem, I have these sufferings. हम ये सोचते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे ये परेशानी, मुझे वो परेशानी, हम उसी चक्कर में घूमते रहते हैं और समझ नहीं पाते। But when we are tired about this kind of mistake and sufferings, maybe we need to find a good yoga acharya like Naveen ji and like Rajesh Nanda ji. जब हम इन सब चीजों से थक जाते हैं, जब हम समझ नहीं पाते हैं और परेशानियों में गिर जाते हैं, तब हमें संतों की जरूरत पड़ती है जो हमें सही रास्ता दिखाएं। If we want to learn about our deeper connection with God, we need to go to Yogi Satoshi, you go Govind ji. अगर हमें उनका संपर्क चाहिए, भगवान से सीधा संपर्क चाहिए, तो वो दिखाने के लिए हमें ये सब योगीचार्य जी, सब संत महाराज की जरूरत है। But if we want to prepare our mind and soul for a spiritual life, we need to go to Prapanacharya ji. लेकिन अगर हमें अपने स्पिरिचुअल लाइफ चाहिए, आध्यात्मिक लाइफ चाहिए, हमें स्वामी दत्तात्रेय जी के सानिध्य में जाना होगा। For that, come back to the dialogue between Sri Krishna and Arjuna. चलो हम वापस आते हैं, क्या डायलॉग था, क्या संवाद हुआ श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में। Arjuna one moment said, oh my God, my Lord, this yoga to the control of the mind you want to teach me is so difficult. ये जो आप मुझे दिमाग को ये योगा सिखा रहे हैं, मन को स्थिर करना सिखा रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है। Emotions are very difficult. ये जो भावनाएं हैं, ये बहुत मुश्किल है, इसको नहीं संभाल सकता। Manu, there one book called Manu Smriti. Manu say to control the mind is more difficult than, is more easy to control 100 madness elephant than to control the mind. माइंड को कंट्रोल करना एक पागल हाथी को कंट्रोल करने से भी ज्यादा मुश्किल है। With this future, what we do? आप क्या करें? But that Arjuna say, I don't know what happened because the life is very short. तो अर्जुन कहते हैं ये जिंदगी बहुत कम है, थोड़ी सी है, हमें समझना तो पड़ेगा। And to control the mind is very difficult. और लेकिन माइंड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। But Krishna say, don't worry, because death kill the body, but don't kill the mind. उनका नहीं, बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, तो अपने माइंड को किल नहीं करना है, तो बॉडी को किल करना है। There are one part of the mind who is connected with the body, who give you the reference. I'm a woman. I'm from this nation. I'm female. My name is this. This part of the mind is go with the body. जो हम अपने आप को समझते हैं कि मैं ये हूँ, मैं इंडियन हूँ, ये मेरा ये नाम है, ये सब बॉडी के हमारे शरीर के साथ ही चला जाएगा। But the other part of the mind remain. But जो रहेगा उसको कंट्रोल कर। This part of the mind who remain have the knowledge of the yoga you get in this life. हाँ, तो इसी जन्म में आपको इसकी जरूरत, इसी ज्ञान की जरूरत है, इस ज्ञान को मिलने से हो जाएगा। In this life, maybe you learn how to be engineer. इस लाइफ में आप ये तो सीख सकते हैं कि इंजीनियर कैसे बनना है। It's very hard to be engineer. इंजीनियर बनना इतना आसान तो नहीं है। But after, when the death come to the body, engineer, chalo. शरीर चला जाएगा, उसके साथ ये इंजीनियर भी चला जाएगा। But any knowledge you get, you learn in this body with yoga remain forever. लेकिन इस जन्म में अगर आपने सीख लिया कि कैसे कनेक्ट करना है, वो हमेशा रहने वाला है। But it's a happy moment to know this, but there are one happy understanding. We are yoga abrastas. We don't get successful in enlightenment. For that, we are not very happy because we don't get enlightenment. The past life, this is the reason we are here. No. हम यहाँ क्यों आए हैं, वो इसीलिए है कि हम इसको समझ नहीं पाए हैं, इसीलिए दोबारा ये शरीर दोबारा ये मिलता है हमको, और फिर बार बार आके हम यहाँ पर सफर करते हैं, परेशान होते हैं।
But this prarabdha karma, this karma, who is full of samskara, but that is the reason I approve the name of his center. Now, this yoga samskara are tattooed deeply in our sukshma sharira, come back to the next life. और ये जो हमारे संस्कार हैं, ये जो हमारे पिछले कर्म हैं, वो सूक्ष्म शरीर के रूप में रहते हैं और वापस हमारे को इस शरीर में आकर मिलते हैं. This is the reason we are from different nationalities. हम अलग-अलग देशों से यहाँ पे हैं. We have more than the taste of yoga. We are lover of yoga. हम सब योगा को प्यार करने वाले लोग हैं. And we want to continue the work of we don't get successful in the past life. तो अब जो हमारा पिछले जन्म में जिसमें हम सफल नहीं हो पाए, वो इस जन्म में हमें सफल करना है योगा के माध्यम से. For that, Krishna say very clear to Arjuna, also if you don't want, you meet yoga again in your next life. वो फिर उनको बोलते हैं कि आप ये अगले जन्म में भी मिलेगा, अगर अभी नहीं लिया तो फिर अगले जन्म का इंतजार करो. Because it's part of your samskara. क्योंकि ये हमारे संस्कार का ही हिस्सा है. Like we met many good things from the past life, we don't want, but we met again the yoga. पहले जन्म में भी बहुत लोगों ने आके हमें समझाया, लेकिन नहीं समझ में आया, इसीलिए दोबारा जन्म मिला. तो जब तक समझ में नहीं आएगा, ये जन्म मरण होता रहेगा. This is the reason we travel very far from come to India, and Indian gurus go to many countries for spread yoga. But many of these listeners, they have yoga samskara inside of them. इसीलिए इंडिया के बहुत सारे संत बहुत जगह जाके ये सब समझाते हैं और बहुत लोग इंडिया आते हैं इन सब चीजों को समझने के लिए और ग्रहण करने के लिए. For that, yoga is maybe new for many, but for others no. बहुत सारे लोगों के लिए नई बात है योगा, लेकिन हमारे लिए जो इस में रहे हैं उनके लिए आम बात है, कोई नया चीज नहीं है. I started my yoga life in 1974. 1974 में मैंने ये अपना योगा का लाइफ शुरू किया था. I'm a yoga acharya certified by Shivananda organization with Swami Vishnu Devananda. योगाचार्य का टाइटल मिल गया था योगानंदाचार्य जी. And I understand when I do this course, I start to learn how to learn. When I do this course, I understand, I learn from this course how to learn. इस कोर्स से मुझे समझ में आया कि पढ़ना कैसे है, क्या सीखना कैसे है, वो मैंने समझा. Not my knowledge ended from this course. नॉलेज मैंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, ज्ञान को प्राप्त कैसे करना है. My adventure in yoga start from this moment. योगा में मेरा जो एडवेंचर था, मेरा जो एडवेंचर एडवेंचर पे मेरा जो शुरू हुआ वो वहीं से शुरू हुआ. Like a doctor, when they finish his studies in the university, they need to go very close to the other doctors for learn what is medicine in real practice. जब डॉक्टर बनते हैं तो शुरू में नहीं समझ में आता है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है और तब वो जाके रियल में डॉक्टर बन पाते हैं. For that, after the yoga certification, you need to go at the feet of the gurus and start to learn yoga in your daily life. डिग्री लेने के बाद समझ में आता है कि जब तक उसको जीवन में नहीं उतारा है, तब तक उस योगा का कुछ फायदा नहीं हुआ. Because start from zero is like if you want to learn mathematics or physics from Einstein. Not possible. You need to have some adhikara, some basic, no? अगर आपको आइंस्टाइन से सीखना है, कुछ भी मेटाफिजिक्स का सीखना है, तो उसके लिए आपकी कुछ अधिकार होना चाहिए, आपको एबल होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए. For that, all the yoga training courses are in fact yoga learning course. ये सब योगा सीखने का कोर्स है, जीवन में उतारने का नहीं. It teaches us how to learn yoga. ये हमें पढ़ाता है कि योगा को कैसे पढ़ें. Yoga is a divine connection. योगा जो है वो हमारा भगवान के साथ मिलन का It's a divine connection because yoga is the way of to link it with yoga. योगा का मतलब लिंक करना, जोड़ना. With yoga. योगा के साथ जुड़ना. Because yoga, not yoga.
yoga is one of the name of Shiva. योगा शिवा का एक ही दूसरा नाम है, Because yoga, Shiva, is who is linking all the jivas, all the living beings in the existence. बिकॉज शिवा ने ही सभी जीवों को आपस में जोड़ के रखा है. For that, the yogin is who learn how to be linked with with yoga, with Shiva. योगी वही है जो अपने आप को लिंक करता है, शिवा के साथ जोड़ता है. In the moment we are linked with the Supreme Self, we are linked with all the living beings of the universe. जब हम उस भगवान से जुड़ जाते हैं, उस शिवा से जुड़ जाते हैं, उसी के माध्यम से हम इस जीवन के सभी जीवों से जुड़ जाते हैं. Well, what are we understanding by yoga? और योगा से हम समझते क्या है, और क्या समझते हैं, योगा मतलब क्या? We understand by yoga that is a healthy lifestyle. हमें ऐसा लगता है कि वो एक जीवन जीने की शैली है, एक अच्छा जीवन जीने की शैली है, Which originated in India. जो इंडिया में शुरू हुआ. It is now considered a worldwide accepted from science. अभी वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में मान्यता प्राप्त हो चुकी है, इसीलिए उसको योगा वर्ल्ड का Good, like a science. But Western culture is also embracing it as a healthy and must-have form of technical exercises. पश्चिम के देशों ने भी इसको समझ लिया है कि अगर हमें हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, अगर हमें एक अच्छी जीवन शैली चाहिए, तो योगा को अपनाना ही होगा. But yoga is not a fitness. पर योगा खाली शरीर को स्वस्थ रखने की बात नहीं. Beyond what we believe or seem to us, जो हमें दिखता नहीं है, उसके भी वो आगे है. there is a more important source that is related to yoga. एक और चीज है जो योगा से जुड़ी हुई है. And it is yoga itself, its tradition, method, and the scriptures who revealed us who is yoga. तो यही जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं और जो हम पढ़ते हैं, जो समझते हैं, वही हमें बताता है कि सच का योगा क्या है. There is a well-founded certainly, and that is that the yoga is a main part of Hinduism. ऐसा बोला जाता है कि जो योगा है वो हिंदुइज्म का एक अंग है, एक इम्पोर्टेंट अंग है, एक स्थायी अंग है. For that is to say, yoga is linked, and the source of yoga is the Vedic Dharma. और ये भी कहा जाता है कि जो इसका केंद्र है, जो योग का केंद्र है, वो वेद धर्म. And the other two great religious confessions of Dharma, like Buddhism and Jainism. तो सभी इसी को फॉलो करते हैं, उसी के पाठ हैं, चाहे वो बुद्धिज्म हो या जैनिज्म हो. उसका जो केंद्र है वो वेद धर्म है. But the main part of yoga in all this religion is meditation. और इन जितने भी धर्म हैं, उनका जो केंद्र है वो ध्यान ही है, जो हम ध्यान करते हैं. Yes. In the Svatara Upanishad say, Swadeham kritva pranavan chotaranim Yene mata navyasa devam pasyam nigudvat, making one's own body the lower piece of wood. Making one's own body the lower piece of wood. अपने शरीर को बनाना एक नीचे के स्तर की बात है. And the pranava, means the om, is the upper piece of wood. और जो ओम वो हम बोलते हैं, वो उसका ऊपर का हिस्सा है. And practicing churning in the form of meditation, और ध्यान के द्वारा जब हम उसको चरण करते हैं, जब हम उसको बिलोते हैं ध्यान, one should realize God तब हमें भगवान का पता चलता है. as one would find on something hidden. जैसे कि गोल्ड का हमें तब पता चलता है जब वो कोई वो आभूषण बनता है, तो पता चलता है. With the body, the approach to Ishvara cannot be realized. इस शरीर से हम ईश्वर को नहीं पा सकते. Ishvara is like the fire hiding within the body. ईश्वर एक आग की तरह है जो हमारे अंदर छिपा है. It's activated and become present thanks to the constant practice of meditation. ध्यान की प्रक्रिया से हम इसको अंदर जाकर पा सकते हैं. And the breath has implicit the pranava. The breath. And the breath, जो हम सांस लेते हैं, सांस के द्वारा वो हमारे अंदर मौजूद है. The pranava. Pranava is the power of the om,
manifested in the breath. जो ओम है वो जो हम ओम की जो ध्वनि है वो ब्रेथ के माध्यम से हमारे सांस के माध्यम से हमारे अंदर उतरी है. And when we meditated, this power of Om is manifested in ajapa japa, the repetition without repetition. This power of ओम जब हम मेडिटेट करते हैं अपने अंदर जाते हैं तो वो अजपा जाप बन जाता है. वो हमें जपना नहीं पड़ता, वो अपने अंदर ही हमारे अंदर गूंजता रहता है. The concentration of the mind in this Om manifested in the breath जो ये सांस में हमारा ओम की ध्वनि जो है वो आती है, manifest in our consciousness the Om. वो हमारे कॉन्शियसनेस में ओम की ध्वनि धारण हो जाती है. For that, in the Sutasvatara Upanishad, this process is named or called meditation. स्वतः सारा जो उपनिषद है उसमें इसी प्रोसेस को, इसी को ध्यान कहा गया. Yungyate mana ut yunyate diyo vipra viprasya brihato vipachchitaha vihotra dade vayunavideka imahi devasya savitu parishtute. This is a sentence there in the Rig Veda. ऋग वेदा में एक सेंटेंस है We say, explain it as how the wise, they are linked with God जो वाइज लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो भगवान से कैसे मिलते हैं. when they get enough intelligence जब उनको विवेक आ जाता है, उनकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है, to upgrade his mind तो वो अपने दिमाग को अपने ऊंचाई पर ले जाते हैं through meditation. ध्यान के माध्यम से. Because when the buddhi, the intelligence is only in the prakriti, in the matter, लेकिन जब हमारी बुद्धि ये छोटी मोटी चीजों में ही चलती रहती है, they created vipras, intelligent one people, बहुत से इंटेलिजेंट पीपल को, but no jnanis, वो no इंटेलिजेंट तो sages. बन जाता है, समझदार तो हो जाता है, लेकिन ज्ञानी नहीं बन पाता. For that is important to understand through yoga, we created one concept of human being, never any science give us except yoga itself. योगा के माध्यम से ही हम उस विवेक को जागृत कर सकते हैं और इसी के माध्यम से नहीं होगा. There are many definitions of yoga in the scriptures. स्क्रिप्चर्स में बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे डेफिनेशंस हैं योगा के. I give you one is yoga is the process to link it with yoga, Shiva. मैं आपको एक ही सिंपल देता हूँ कि योग क्या है, अपने आप को शिव से जोड़ने का साधन. But the yoga postures we do, तो योगा जो पोस्टर्स हम करते हैं, जो योग के आसनास हम करते हैं, they are a way of mudra to channelize the grace of God. उससे हमें जो गुरु की ग्रेस है, जो गॉड की ग्रेस है, उसको एक रास्ता मिलता है. For that, we need these asanas, these postures, इसके लिए हमें ये आसन और ये पोस्टर और ये सब करना है, because our mind lives in the body. क्योंकि जो हमारा बॉडी दिमाग है वो बॉडी में ही रहता है, And our soul live in the mind. और हम दिमाग में रहते हैं. तो For that, the world we live really is in our own body. So जो वर्ल्ड है, पूरा संसार हमारे अंदर ही है. For that, if we don't take care of our body, our mind is impossible to upgrade to the enlightenment. अगर हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो माइंड को एनलाइटनमेंट में ले जाना मुश्किल हो जाएगा. What happened with the old age? जब हम बूढ़े हो जाते हैं, Maybe our mind is very strong, माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है उस टाइम पे, but the body captured the mind. लेकिन जो शरीर है वो नहीं चल पाता, तो वो पकड़ लेता है मन को. And if the time we have in this existence for get enlightenment depend of the life of the well state of the body and the mind. अगर हमें एनलाइटनमेंट चाहिए तो अपने शरीर का और मन का दोनों का ध्यान रखना जरूरी है. For that, we need to invest to take care of our body, for take care of the mind. इसलिए हमें अपने शरीर का ध्यान रखना भी जरूरी है, ताकि हम अपने मन का ध्यान रख सकें. Because really yoga is realized through the mind, not through the body. बट
सच में अगर माने तो जो योगा है वो बॉडी की बात, शरीर की बात नहीं है, मन की ही बात है। Samastha yoga uchyate. This is one of good definition about what is yoga. योगा का एक डेफिनेशन है समस्त योग उच्यते। ओम This- उच्यते। This kind of sama, this kind of equilibrium give us the capacity to have one mind to discriminate it well. इसी से हमें पता चलता है कि हमें दोनों में क्या भेद है, भेद कैसे करना है। For have discrimination, what is good and bad, ये भेद करने के लिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, we need knowledge. हमें ज्ञान चाहिए। And this knowledge comes from two sources. और ये नॉलेज दो जगह से मिलती है। One of the sources is the scriptures. एक तो हमारे स्क्रिप्चर्स है, Another directly from the Guru. और दूसरा सीधे गुरु के माध्यम से। But the scriptures are very clear. स्क्रिप्चर्स में ये नॉलेज एकदम साफ रहती है। If you practice without a guru, maybe you damage yourself. और अगर आप किसी गुरु से करते हैं तो हो सकता है कि उसमें कुछ मिक्स मैच हो जाए और वो डिविएट हो जाए। Why many persons we practice hatha yoga exercises, they don't suffer too much problem? जो लोग हठ योगा प्रैक्टिस करते हैं और आसना से अपनी बॉडी को स्वस्थ रखते हैं, शरीर को, उनको प्रॉब्लम नहीं होती। No only asanas, pranayama mostly. प्राणायाम करके अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं तो वो परेशान नहीं होते। Because they don't practice too much, it is really. They learn but they don't practice. हाँ, वो पढ़ाते हैं, सीखते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं, अपने जीवन में नहीं होता। But if they learn, in example, Bastrika, not in the right way, and they are not controlled by his teacher, they damage his lungs, sure. अगर वो ठीक से नहीं समझ पाते हैं और एक किसी अच्छे समझदार गुरु की सानिध्य में नहीं करते हैं तो अपने फेफड़ों को ही नुकसान कर सकते हैं। If also if trust or not trust in the presence of the Shakti inside of the body, क्योंकि वो जो शक्ति है, वो जो ताकत है हमारे बॉडी के अंदर है, also they start to suffer problem with the bad channelization of the Shakti in the body and the mind. हाँ, लेकिन उसका अगर गलत चैनलाइज हो गया उस शक्ति का तो वो प्रॉब्लम में भी पड़ सकते हैं। For that is important to understand is we don't practice well. अगर हम अच्छे से उसको नहीं समझेंगे और नहीं उसको अमल में लाएंगे, And we don't have the protection of the knowledge we get from the scriptures and the Guru, तो फिर हमें जो स्क्रिप्चर्स और गुरु से नॉलेज मिल रहा है उसको हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे। yoga don't become these wellness blessings they are. जो योगा है, ये जो ब्लेस्ड लोग हैं उन्हीं के लिए रह जाता है। But I insist, many persons don't suffer more problem is because they are not really practitioners. हाँ, समस्या यही है कि जो पढ़ाया जाता है और जो सीखा जाता है उसको अमल में नहीं लाया जाता जिंदगी। I want to conclude. मैं ये भी बताना चाहता हूँ। Give me a moment. Today is yoga day, like we say many times. This yoga day, बहुत बार पहले भी बात कर And चुके हैं। this day is the day of all yoga practitioners, ये सभी योगा करने वालों का दिन है, but all yoga teachers too. सारे योगा टीचर्स का भी दिन है। In our tradition, we have in the full moon, normally it's in July, this year is the 3 of July, Guru Purnima. गुरु पूर्णिमा हर साल हम मनाते हैं और इस बार फुल मून जब होता है जब पूरा चांद आकाश में चमकता है, इस बार 3 जुलाई को मनाने वाले। But I want to recommend that all of you, please remember and pay respect to your yoga teachers in this day. तो योग पूर्णिमा जब हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं तो मैं आपको निवेदन करता हूँ कि आप अपने गुरुओं को याद करें और उन्हें प्रणाम करें। But also in this day of the International Yoga Day. एंड इंटरनेशनल योगा डे जो है उस दिन भी और गुरु पूर्णिमा के दिन भी हमें याद करें। All of us who are in love with yoga, हम सबको योगा से प्यार है। we feel grateful to the culture of India for giving us a path and a goal.
हम बहुत ही आभारी हैं भारत के, इंडिया के, जिन्होंने हमें ये योग का रास्ता दिखाया। From Yogalaya Ashram, the Vedic Foundation International, योगालय आश्रम में हिमालयन वैदिक फाउंडेशन की तरफ से we give the most sincere thanks to the government of India and its Prime Minister, His Excellency Modi, हम आभार प्रकट करते हैं इंडिया की गवर्नमेंट का और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनका भी, for having created and promoted this festival of peace, that is the Day of Yoga. जिन्होंने इसको आगे बढ़ाने के लिए अपना बहुत योगदान दिया है और पूरे विश्व में इसकी ख्याति को बढ़ाया। It's a great vision when we see all the yoga lovers in all parts of the world, they join together in peace, in respect, and with this goal, who is yoga, is a part of our life, is not out of our life. Tasmat yogi bhava. You need to be a yogi, say Krishna to Arjuna. श्री कृष्ण अर्जुना को बताते हैं कि आपको एक योगी होना है और हम बहुत ही फॉर्चुनेट हैं, बहुत ही खुश महसूस कर रहे हैं आज के दिन कि इस योगा ने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई। Here they say yoga is not only for ascetic, for sannyasi, this is true. कहा जाता है कि योगा सिर्फ सन्यासी के लिए है, ऐसा अब नहीं रहा। Yoga is for engineers, योगा इंजीनियर्स के लिए है, for डॉक्टर्स के लिए, for people who sweep in the streets. जो झाड़ू लगा रहे हैं सड़क में, उनके लिए है। Yoga is for monks too. monks I want to repeat more in high voice. Yoga is also for monks because normally many monks don't practice yoga. योगा साधु संतों के लिए भी है, पर आजकल ज्यादा साधु संत लोग उसको धारण नहीं करते। And yoga is for have happy, holy, and healthy life. तो योगा है खुश रहने की और अध्यात्म में रहने की, स्वस्थ रहने की, happy, healthy, and holy life. हैप्पी हेल्दी एंड होली लाइफ के लिए, अभी खुश स्वस्थ और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। Thank you for celebrating in Yogalaya Ashram. धन्यवाद। सहयोग दिया। You want to sing in with me? I'm in love with the patron of all the yogis, who is Hanumanji. Hanuman. I'm in love. And Hanumanji was in love of Sri Rama, who was Ishvara, like Dharma. For that, why we don't sing into Rama and Hanuman, and we remember we are yogis under this good example. हनुमान से बहुत प्यार करते हैं। हनुमान जो भक्त थे, श्री राम के जो धर्म के संस्थापक थे, इसीलिए जो हनुमान थे वो एक बहुत बड़े योगी थे और हम भी उसी योगी को प्रणाम करके इसीलिए उनसे वो बहुत प्यार करते हैं। Shri Ram. Shri Ram. Shri Ram. Shri Ram. Jaya Sitaram, Jaya Hanuman, Jaya Sitaram, Jaya Hanuman. Jaya Sitaram, Jaya Hanuman, Jaya Sitaram, Jaya Hanuman. Shri Ram, Jaya Ram, Jaya
Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Jai Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Jai Sitaram, Jai Hanuman, Jai Sitaram, Ram, Jai Hanuman. Jai Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. 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 Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Jai Ram. Jaya Sitaram, Jaya Hanuman, Jaya Sitaram, Jaya Hanuman. Jai Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram, Jai Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram, Ram 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 Jaya Sitaram, Jaya Hanuman, Jaya Sitaram, Jaya Hanuman, Jaya Ram, Jaya Ram, Jaya Sitaram, Jaya Hanuman, Jaya Sitaram, Jaya Hanuman, Jaya Sitaram, Jaya Hanuman. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, oh Shri Ram, oh Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, oh Shri Ram, Jai Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram, Jaya Sitaram, Jaya Hanuman, Jaya Sitaram, Jaya Hanuman, Jaya Sitaram,
Jai Hanuman, Jai Sitaram Ram, Jai Hanuman, Jai Sitaram, Please take seats, and now we may review
बैठकर थोड़ी देर के लिए ध्यान करें। Please adopt your asana. Straight and quiet. Also, if you are seated in a chair. बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे, अगर कुर्सी पे हैं तो भी कमर सीधी रखेंगे। Adopt Dhyana Mudra or simply positionate your hands close to your knees. आपके हाथ अपने घुटनों के पास रख लीजिए। Close your eyes. आंखें बंद कर लेंगे। Relax your face. अपने फेस को एकदम आराम की स्थिति में रखेंगे। And positionate the top of your tongue in your upper teeth. आपके मुंह के ऊपर के तालू की तरफ ध्यान रखेंगे। Relax your stomach. अपने पेट को भी शांत रखेंगे। And you start to thinking, you send your breathing 4 finger below your navel. और आप अपने सांस को नेवल के 4 उंगली नीचे की तरफ तक लेके जाएंगे। For that, your breath need to be very lightly. उसके लिए हमारी सांस बहुत ही साधारण होनी चाहिए। Because there are no movement of the body, you don't need to breathe too much. क्योंकि हमारे शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही है, तो हमें बहुत ज्यादा सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। Make your breath go thin like a silk thread. एक रेशम के तार की तरह आपकी सांस आराम से आनी और जानी चाहिए। Under any circumstance, don't move a single muscle of your body. किसी भी स्थिति में अपने शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं चलाएंगे। Your body is like one statue of bronze. हमारा शरीर एक तांबे की मूर्ति के समान है। Invite your senses to go inside of you. सेंसेस को अपने अंदर ले जाने की कोशिश करें। Because there are no movement, your senses, they don't need to go outside. हमारी इंद्रियों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। The secret of this meditation is to maintain your body firm, stable, and quiet. इस ध्यान का रहस्य यही है कि आप अपने शरीर को एकदम स्थिर, शांत रख पाएं। And don't move under any circumstance. और किसी भी स्थिति में ढीले नहीं। Your asana is firm. आपका आसन एकदम स्थिर है। Immediately your breath start to be very thin and little. आपकी सांस बिल्कुल धीरे धीरे चलनी चाहिए। Concentrate your attention, your thoughts, आपका ध्यान अपने गले पे ले जाए। how the breath enter in your nostril. कैसे जो आपका सांस है आपके नासिका से अंदर जा रहा है। Don't pay attention to the thoughts. गले की तरफ ध्यान न दें। Don't try to control them. कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। Only fix your attention how the vital air enter and go
from your nostril. सिर्फ सांस को अपने नासिका द्वारों से आते और जाते हुए देखें. Offer your thoughts to this river of life who is the breathing. ये जो नदी बह रही है सांस की, उसकी तरफ ध्यान करें. Like you offer the flowers to the Ganga Nadi. जैसे कि आप गंगा नदी में फूल बहाते हैं. Put your thoughts in your breathing and be free from them. अपने सांस पे ध्यान देके फ्री हो जाइए. For increase your emptiness of the world, for increase the void of your mind, आपके दिमाग को और बड़ा करने के लिए concentrate it more in the exhalation process. ज्यादा ध्यान सांस के बाहर निकलने पे दें. And renounce. नाक के नीचे से Shri Ain
Klim, Krim, Dum, Dum, Gum, Gum, Hum, Hum, Pat, Swaha, Om, Shanti, Shanti, Shanti. Remember the teachings of all the Yoga Upanishads. उपनिषद के पाठ को याद रखें। The body is affected for many diseases. बॉडीज को बहुत चीजों का असर हो जाता है। It's impossible to avoid the pain in the body. ये बहुत मुश्किल है कि बॉडी में पेन ना होगा। But with the yoga knowledge in practice, लेकिन अगर हम योगा की जो ज्ञान है और उसको अपने में धारण करेंगे, we get more healthy body, हमें स्वस्थ शरीर मिलेगा, who live more years in this world तो हम इस संसार में और कुछ सालों तक रह पाएंगे। for the cause of the Buddhi Prapti, तो विवेक की प्राप्ति के लिए, for the cause of the enlightenment. और फिर हम एनलाइटनमेंट की तरफ जा सकते हैं, आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ सकते हैं। And learn another thing more. और फिर हम और आगे जाएंगे। It's possible to avoid the suffering in the mind. फिर ये हमारे जो माइंड हमें काम करता है, उसकी जो परेशानियां हैं, उससे मुक्ति मिल सकती है। By the grace of the yoga, the knowledge of the yoga in practice, योगा का प्रैक्टिस करके योगा को अपने जीवन में उतारकर we avoid the transference of the pain of the body to the mind. हम अपने शरीर का जो दर्द है उसको अपने मन तक ना जाए, उसमें सक्षम हो जाते हैं। Because the pain in the mind we call suffering is the more biggest dukkha. क्योंकि जो हमारे मन का दुख है वो ज्यादा बड़ा दुख है, शरीर से भी ज्यादा। When we learn how to preserve our mind from sufferings, हमें सीखना है कि अपने मन को दुखों से मुक्त कैसे करें। we get the no space in our mind हमें अपने माइंड को कंट्रोल में लाना है, to open ourselves to the consciousness of Shiva. ताकि हम शिवा की कॉन्शियसनेस में जा सकें। Because when we are focalized in the pain of the body and suffering of the mind, क्योंकि अगर हम बॉडी की दर्द और मन की सफरिंग की तरफ ध्यान देते हैं, we emphasize our mithya of cheating of how we are. तो हमें याद आता है कि ये कितना झूठ है ये सब संसार। But Shankaracharya say, Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupam Shivoham Shivoham. शंकराचार्य जी ने बोला है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। We know we are Shiva जानते हैं कि हम शिव हैं, when we don't have this emphasis in the body who is full of pain. जब हमारा ध्यान इस शरीर पे रहता है जो दर्द से भरा है, And we learn how to avoid the sufferings of the mind. और हम सीख जाते हैं कि जो हमारे मन के दुख हैं उसको कैसे दूर करें। We is similar to say we know the art of living. तब हमें समझ में आता है कि जीवन जीने की कला क्या है। We need to be a yogis. हमें योगी होना है, We need to know how to eat in Dharma. हमें ये सीखना है कि धर्म में कैसे स्थापित हो, Avoid unnecessary sufferings from others and in the end of ourselves, suffering in ourselves. ताकि हम दूसरों के द्वारा दी हुई दुख और आखिर में अपने से उत्पन्न किए हुए दुख को पार पा सकें। The food is connected with our mind. जो फूड है वो हमारे माइंड से कनेक्टेड है, And माइंड से
स्थापित है। and created the nature of the tattva of our mind. उसी से हमारे मन का जो तत्व है वो बनता है। And yogis always they eat sattvic food. योगीस हैं वो हमेशा सात्विक भोजन करते हैं। And they are not sattvic food who is made it or originated from violence. और सात्विक फूड वो है जो अहिंसा के बिना बना है। For that, a yogi don't eat meat, flesh, eat fish or eggs. इसलिए जो योगी है वो मीट, मांस, मछली, अंडा ये सब नहीं खाते। If we want to eat the things, अगर हम ये सब खाना चाहते हैं is under our own responsibility. तो हमारी जिम्मेदारी है। But the yoga says they don't recommend it if we want to get successful in our yoga. अगर हमें योगा में सफलता चाहिए तो हमें ये नहीं खाना। We need to learn how to breathe properly. हमें कैसे अच्छे से सांस लेना है वो सीखना है। Because the normal process of our swara, of our breathing, क्योंकि जो हमारा साधारण लेने का तरीका है श्वास का, connected our mind with the world. उससे हमारा जो मन है वो मिला होता है। But when our breathing is in dharma, means in yoga, पर जब सब कुछ धर्म और योग में होता है, our breathing connected us with God. हर चीज हमें भगवान से मिलाती है। Because Om is the sound of the pranava, who is the name of the Om. क्योंकि जो ओम की ध्वनि है वो भगवान की ही ध्वनि है और उसी से हमें मिलना है। The name is pranava. उसका नाम पराधर्म है। Pranava, प्राणाव, who is emerged from prana for the breathing. जो प्राण से उत्पन्न हुआ है, हमारी सांस से उत्पन्न हुआ है। This means God are in your breathing. इसका मतलब भगवान हमारी सांसों में है। For that, when we learn how to breathe in yoga, जब हम ये सीख लेते हैं कि योगा में कैसे सांस लेना है, we get successful in a long life, but also in meditation. तब हम सफल हो जाते हैं अपनी लाइफ में नहीं, ध्यान में भी। We need to do proper exercise. हमें अच्छी तरह से एक्सरसाइज करना चाहिए। Because body captured the mind. क्योंकि शरीर से ही मन बनता है। When we are sickness, the body is the king. जब हम बीमार हो जाते हैं तो सारा ध्यान बॉडी पे ही रहता है। And when we start to understand the life, we are very old. और जब हम समझना शुरू करते हैं जिंदगी को तो हम बूढ़े हो चुके होते हैं। For that, the proper exercise we do when we are young and after when we are old help us a lot. जब हम जवान हैं और अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, तो वो हमारा बुढ़ापे में भी साथ देती है। For that, the yoga exercises are our best friends. उसके लिए योगा की जो एक्सरसाइजेज और आसना है वो सबसे अच्छे तरीके हैं। In the tally of the daily life, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में we need one special category. एक कटोरी चाहिए। And this category, we need to have time for ourselves. और वो है अपने लिए समय निकालना। Yogi is the opposite of a karmi. तो योगी है और कर्मी का अपोजिट उल्टा है। Now, in this modern time, also the saints, monks, they have a big agenda, big schedule of many things. आजकल के मॉडर्न जमाने में बहुत सारे संत महात्मा भी उसके उल्टा चलते हैं। They are full of activities. बहुत सारे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। But this is not good. पर ये ठीक नहीं है। Krishna teaching the Gita, yogi know how to act and what is the nature of not action too. कृष्णा अर्जुन को बताते हैं कि एक्शन कैसे करना है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो भी बताते हैं। Karmi is not a question of you are a businessman or you practice udyoga. Udyoga is business. योग है उसको हम बिजनेस कहते हैं। Or you practice yoga. अगर आप प्रैक्टिस में रह के उद्योग करते हैं तो वो भी योग बन जाता है। If our mind is attrapted in rajas, अगर हमारा दिमाग रजस में ज्यादा है, they are not prepared for the sattva of meditation.
तो हम ध्यान के सत्व में नहीं जा सकते। For that, in this tally of the daily life, we need to find time for our sadhana. इसलिए रोजमर्रा की जिंदगी में हमें अपनी साधना के लिए वक्त निकालना जरूरी है। For japa, mantra, studies, asanas, etc. जप करना, मंत्र करना, पूजा करना और अपनी साधना करना। And in this process of how to be a yogi, और इस योगी बनने की राह पे चलने के लिए with the similar of the process of to be adhyatmic, meaning a spiritual person, इसका सीधा सा मतलब आध्यात्मिक होना भी है। we need to find time for transform our mind in the mind of a wise man. हमें अपने दिमाग को एक समझदार व्यक्ति की तरह चलाना है। There are two concepts, jnana and vijnana. हमें ज्ञान और विज्ञान दोनों का ध्यान रखना है। Jnana is when we get the knowledge from the scriptures and our gurus when they explain it us, the scriptures. ज्ञान वो है जो हमें वेदों से और स्क्रिप्चर से मिलता है और गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है। The scriptures, they are inside of them the legacy of the patriarchal yogis, the yogis, ancestor yogis. हमारे पुराने योगी हैं, उन्होंने अपने ज्ञान को स्क्रिप्चर्स के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। For to avoid the misunderstanding about what is yoga, we need to learn from the sources of the scriptures. अगर हमें इस कंफ्यूजन से दूर होना है कि योगा का सही में मतलब क्या है, तो हमें उसके स्क्रिप्चर्स के बिल्कुल आगे जाना पड़ेगा, स्क्रिप्चर्स के अंदर जाके समझना पड़ेगा। Maybe our guru or teachers are very good with Vidvanis, they're good speaker or very intelligent one, but we need to ask them, please teach us from the basis of the shastras, of the हो scriptures. सकता है हमारे गुरु बहुत समझदार हो, बहुत अच्छा बोल लेते हो, बहुत अच्छे वक्ता हो, लेकिन हमें उन्हें ये भी समझना पड़ेगा कि वो हमें जो स्क्रिप्चर्स हैं उसके माध्यम से ठीक-ठीक समझाएं। In this way, we avoid misunderstanding and cheating. तो हम मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो हम उसको ठीक से समझ पाएंगे। Because the ignorant teachers, they are expert in teach many things they don't know. क्योंकि जो ऐसे टीचर्स हैं, वो एक्सपर्ट इस चीज में पूरे माहिर होते हैं कि वो सिर्फ बताते हैं, खुद उसको अप्लाई नहीं करते, अपने ऊपर धारण नहीं करते। But when the teachers, they follow the rules of Patanjali, Tapas, Swadhyaya, and Ishvara Pranidhana, evidently they discipline themselves, they study and apply in his life, and they do meditation. और जो पतंजलि के जो रूल्स हैं, तपस, स्वाध्याय, मेडिटेशन, उसको फॉलो करते हैं, तो वही सही में टीचर्स कहलाने के लायक होते हैं। Vijnana means when you apply the knowledge you get from the scriptures and your guru in your daily life. विज्ञान का मतलब है कि जब आप जो आपने सीखा है उसको अपने जीवन में उतारते हैं। For that, congratulations for to be a yogis. आपको सबको बहुत बहुत congratulations कि आप एक योगी की बनने की तरफ चल रहे हैं। But to be a yogi is never ended in your yoga. लेकिन योगी की तरफ चलना कभी समाप्त होता नहीं है। It's a path is never ended. ये एक ऐसा रास्ता है जो कभी खत्म नहीं होता। Congratulations for all of you who attended this program online. आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत congratulations कि आपने ये प्रोग्राम from many countries, from Hungary, Spain, Portugal, Russia. I don't know how many countries. Congratulations, all of you, for coming. And congratulations for our Sanjayas, mean our translators. Big clap. Because Krishna teaches Arjuna, but without Sanjaya, we don't learn anything from Krishna. That's great. बहुत बहुत सुंदर। जैसा मैंने आप लोगों से कहा था, ऐसा कुछ मिला या नहीं मिला, जरा हैंड रेज करिए।
मिला है? You will get very beautiful, so you got it. Great. बहुत सुंदर। स्वामी जी का जो अपना अनुभव है वो अपने आप में रोल मॉडल है। Swami Chandra Tilak ji is a role model in itself. हमारी युवा पीढ़ी के लिए कि वह कैसे सहज पद्धति से अपने आप को योग में उतारे, इसका इजी वे, सबसे सहज और सरल मार्ग आज स्वामी जी ने हम सबों को बताया। Very simple way how to assimilate this knowledge in our life, and even to all the youngsters he is teaching so nicely. स्वामी जी ने अभी कहा चरई वेती चरई वेती चरई वेती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। Walking, keep walking, keep walking. इसी को गुरु गोरखनाथ जी ने कहा है आगे आगे गोरख जागे। Gorakhnath ji has said, "He thus I'm going." आगे आगे गोरख जागे। जब हम आगे आगे चलते हैं तो गुरु हमारा जो है वो आगे का सारा मार्ग इजी आसान करता जाता है। Guru shows us the way when we just move ahead and gain that knowledge. राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, आज आपने सभी योग के आयामों को यहाँ पर जाना, समझा और अनुशासन में उतारा। Today, all types of yogas you are assimilated and you are taken a pledge to have it in your life practically. हम इसी के साथ ही बहुत बहुत आभारी हैं कि स्वामी जी इसी प्रकार भविष्य में हम सबों का मार्गदर्शन करते हैं। We are so grateful to Swamiji that in future also he keep guiding us like this, organizing. अब मैं रिक्वेस्ट मैं करूंगा राजेश नंदा जी से, जो स्वामी जी के हनुमान हैं, वो वोट ऑफ थैंक्स जो यहाँ पर लोग आए हैं सबों का एक बार धन्यवाद करेंगे। राजेश नंदा जी। Rajesh Nanda ji, who is the Hanuman like for Guruji, he brings. सबसे पहले मैं गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। गुरु चंद्र तिलक जी को, आशुतोष जी को और भी जो गुरुजन बैठे हैं यहाँ पर, उन सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ योगा डे की, और कि आप सब स्वस्थ रहें। बस यही शुभकामनाएं मेरी तरफ से। नमस्कार। Program to all the people and we my gratitude to everybody and for your healthy life I pray and I teach. बहुत बहुत आभार, आप सब लोग आए और सब लोगों ने इसको सुना। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के माध्यम से हम सब लोगों को धन्यवाद करते हैं। We are thankful to everybody who has made this possible. All over the world this is going. Thank you so much. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम Thank you for giving me this opportunity. Oh. I'm so grateful. Thank you so much. Now we concluded here in this way our daily yoga day, and thank you very much again for coming, and thank you very much for all our team, the different ashramas for organize everything. We are very well organized. I hope the next year we do much better and with your participation. Thank you very much. एक ग्रुप फोटो होना चाहिए, आप लोग यहाँ पर आ जाएं। We have a group photo, all of us can assemble here. I disconnected here, but you don't need to disconnect it because there are one बस big. बैठ जाइए ऐसे करके।
Harían a todos. Vamos a dar por concluida la sesión. Gracias a todos por estar presentes y esperamos mejorar para otras traducciones. Hari on to everyone. Thank you so much for being joining us. The session is over, so we're going to close it. Remember that you can collaborate, sending your economical support for these missions and these kind of activities. Recuerden que siempre pueden hacer su aportación, su donación para soportar, sustentar este tipo de actividades. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la traducción. Muchas gracias a todos los Muchas traductores. gracias a todos los traductores. Gracias a todos.